All right, everybody. Can you hear me? Can you see me? If you can see me and if you can hear me, just type yes in the chat box. Okay, all right. All right, everybody. We are live. Good morning. Day before yesterday, we completed the first and the second units of our AECC paper, and we learned a little about one-way and two-way communication. We learned about the different components of the communication. We learned a little about verbal communication, right? So today, what we are going to do is about verbal and non-verbal communication in detail. हमने थोड़ा सा non-verbal पढ़ा था पहले previous lecture में. आज हम उसी non-verbal communication को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और body language के क्या-क्या components होते हैं वो पढ़ेंगे, right? So let us get started. So today we are going to start with the third unit of AECC, that is the language of communication. I'll just quickly tell you कि इस unit में क्या-क्या है. Basically इस unit में we are going to learn about verbal communication, non-verbal communication. Non-verbal communication के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. I have already told you that verbal communication is a very, very important topic from the point of I think I am experiencing some internet connectivity issues, so I'm very sorry if I get stuck in between. I'll try that doesn't happen again. Right. So let us talk about non-verbal communication, right? So non-verbal communication क्या होता है? हमने previous lecture में पढ़ा था कि जो communication आप बिना शब्दों के करते हैं, जिसमें शब्दों का यूज़ नहीं होता, जिसमें साइंस का या बॉडी लैंग्वेज का, आपके एक्सप्रेशंस का, आपकी टोन का यूज़ होता है, मतलब जो भी चीज़ें जो शब्दों से बाहर आती हैं, तो उस टाइप की कम्युनिकेशन को जो शब्दों का यूज़ ना करके कम्युनिकेट करता है उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, so we are going to study that today. And as I said in the previous lecture that around 90 to 70% of our communication in our day-to-day life is non-verbal, right? बहुत बार ऐसा होता है कि आप बिना शब्दों के यूज़ किए लोगों से बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं और आप अवेयर भी नहीं होते कि आप लोगों से non-verbal लैंग्वेज का या अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं. I'll give you like very small examples. तो body language is very important, especially in your professional life. And अगर आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं स्पेशली तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है. मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप अपने कंधे झुका के बैठते हैं तो उससे ये पता लगता है कि आप या तो डरे हुए हैं या तो अंडर कॉन्फिडेंट हैं, राइट? तो अगर आप एक इंटरव्यू में जाएंगे जहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, आपका पोस्चर कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके सारी बॉडी लैंग्वेज के साइंस हैं जो ये बताते हैं कि आप नर्वस हैं या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो देयर आर चांसेस दैट यू माइट नॉट गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू. सो body language is a very important part of communication, so much so that अगर आप न्यूज़ देखते हो तो ये ट्रेंड आजकल बहुत चल गया है कि जब भी कोई स्टेट का हेड किसी दूसरे स्टेट के हेड से मिलता है तो न्यूज़ चैनल्स उनकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके ये वर्डिक्ट देते हैं कि उनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है. जैसे आई रिमेंबर देयर वाज दिस न्यूज़ वेयर मिस्टर मोदी हैड मेट मिस्टर ट्रम्प एंड उन दोनों ने आपस में हैंडशेक किया था, राइट? तो काफ़ी लंबा न्यूज़ पीस था जिसमें उन दोनों के हैंडशेक को एनालाइज किया था. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडशेक. अगर आप ऐसे हैंडशेक करते हैं दैट मीन्स यू आर अ डोमिनेंट पर्सन. अगर आप ऐसे हैंडशेक करते हैं दैट मीन्स यू आर अ सबमिसिव पर्सन. So there are like
4-5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंडशेक्स, जिससे लोग ये पता लगा सकते हैं आपके सिर्फ हाथ मिलाने के तरीके से कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है. Of body language. And I was telling you how there are different kind of handshakes. आपके हाथ मिलाने के तरीके से पता लग सकता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है. So that is how important body language is. इनफैक्ट अगर आप इंटरव्यूज़ में भी जाते हैं, स्पेशली जो हाई प्रेशर इंटरव्यूज़ होते हैं, सिविल सर्विसेज के जो इंटरव्यूज़ होते हैं या एसएसबी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या उसमें इंटरव्यूज़ पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, एंड देयर इज़ अ पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स सिटिंग, एंड क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो आप जो सवालों के जवाब देते हैं वो तो मैटर करता ही है इंटरव्यू में, बट आपका पोस्चर क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है. बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स उन पैनल्स में बैठ, दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज is the voice or is the internet breaking in between? Just type a yes if the voice and the internet is breaking in between. Okay, I'll try to fix my internet issues very shortly. Okay, I'll try to fix my internet issues. Till then, let us hope that we get good internet for this class at least. If in case you miss anything, अगर बीच में इंटरनेट जाता है और आप कुछ पार्ट मिस कर देते हैं, तो आप उसको दोबारा डाउट्स में पूछ सकते हैं, या वो पार्ट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी अगर हमारे पास टाइम होगा क्लास के एंड में, राइट? सो डोंट यू वरी अबाउट दैट. So we were talking with studies language and the impact that body language has on communication in our day-to-day life is called kinesics. KINESICS. So जो फील्ड ये स्टडी करती है कि बॉडी लैंग्वेज लोग कैसे कन्वे कैसे यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का हमारे कम्युनिकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस फील्ड को हम काइनेसिक्स बोलते हैं. काइनेसिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हो सकता है कि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आए, तो यू नो pay special attention to kinetics and the elements of body language. Now let's come to the elements of body language. As I said कि body language के बहुत different parts, different elements होते हैं, right? So let us see them. क्या different elements होते हैं body? that personal appearance में आप कहते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं आपके फिजिकल अपीयरेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट? फॉर एग्जांपल, अच्छा ये बताएं कि क्या आप लोगों को देख के, यानी कि उनकी दूर से उनकी पर्सन कि कौन ऑफिस गोइंग है और कौन कॉलेज गोइंग? Let me change my internet. Then let us.
Hopefully we'll not get a network issue now. I changed my internet connection. Yeah, so coming back to personal appearance, I was asking you कि मेट्रो में जब आप ट्रैवल करते हैं क्या आप किसी इंसान के अटायर से उसके कपड़ों से और उसका जो भी वो कैरी कर रहे हैं उससे क्या आप पता कर सकते हैं आप क्या जज कर सकते हैं गेस कर सकते हैं कि उनमें से कौन ऑफिस गोअर्स हैं और कौन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं I think you can because see, college students usually carry a bag. They would wear very informal clothes like a t-shirt or a jeans. On the other hand, अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो वो शायद से टी शर्ट और जीन्स नहीं पहनेगा उन्होंने पैंट और फॉर्मल शर्ट पहनी होगी या उन्होंने अपना टिफिन वाला डब्बा लिया होगा या उन्होंने ऑफिस बैग लिया होगा या उन्होंने थोड़ा मेकअप पुट ऑन किया होगा उनका हेयर स्टाइल डिफरेंट होगा राइट तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट किसी की पर्सनल अपीयरेंस से भी आप उसके बारे में काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं किसी ने आपको आके बताया नहीं कि वो ऑफिस गोअर है या कॉलेज गोअर है बट स्टिल यू कैन मेक अ वाइल्ड गेस कि ये जो इंसान है इसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है राइट So my point is that personal appearance is a very important part of body language, which we often ignore. हमें लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है हमने कैसे कपड़े पहने हैं या हम कैसे दिख रहे हैं काफ़ी सारी सिचुएशंस में नहीं फर्क पड़ता है बट when you are appearing for interviews, when you are appearing for formal occasions, when you are going to office, when you have an active professional life तो आपकी personal appearance पे काफ़ी फर्क पड़ता है because that also communicates a lot about your personality. Like I'll give you a very small example. So I am not a very particular person when it comes to cleanliness or when it comes to everything being organized. I'm a fairly disorganized person. So you will always see like my hair will not be very organized. My appearance will not be super organized. On the other hand, my grandmother is a super organized person. उनके बाल में से मतलब उनका जो हेड होता है उसमें से एक भी बाल नहीं निकलेगा उनकी साड़ी हमेशा क्रिस्प होगी इट विल ऑलवेज बी क्लीन सो किसी को देख के यू कैन नो अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी what kind of a person they are. They communicate a lot about themselves through their personal appearance. So, personal appearance is a very important part of body language. Now, the second element of body language is your facial expression. Right? हम अपने फेस से भी और अपने एक्सप्रेशन से भी लोगों से काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करते हैं बिना शब्दों का यूज़ किए राइट अगर आप बहुत दुखी फील कर रहे हैं तो unless and until you try to hide it very hard, it will come on your face, right? You will have a sad face. अगर आप बहुत खुश फील कर रहे हैं तो एक अलग ही ग्लो आता है आपके चेहरे पे अगर आप गुस्सा फील कर रहे हैं जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई डू लाइक दिस the frown on my forehead indicates that I might be angry. Or if I give you a really big bright smile, that shows that I'm happy. So I am communicating a lot of emotion not in words but through my face. अगर आप नर्वस होते हैं तो आप स्वेट करते हैं तो आपके चेहरे से पता लग जाता है कि आप नर्वस हैं राइट so your facial expressions are also a very important part of your body language and sometimes you don't even need to use words अगर आप ऐसे कर रहे हैं so people would ask you what are you thinking right because this indicates that you are thinking something so you communicate a lot to people using your facial expressions also the third element of body language is the head and the posture of the head is a very important part of body language अगर आप अपना सर ये एक बड़ी पॉपुलर कहावत है कि गर्व से सर उठ गया राइट या शर्म से सर झुक गया सो इफ यू आर सैड और इफ यू आर ashamed और इफ यू आर lying आपका हेड बेंट होगा इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल रेज योर हेड राइट सो द वे यू फील determines the posture of your head and how you keep your head also communicates a lot to people right? Just for instance, I don't have to say a yes or a no. I can simply say
this, or I can simply say, so using my head, I am communicating my consent or my non-consent to people. So head is also a very important part of body language. Now comes the posture. Your posture is extremely important, and posture में भी different चीज़ें होती हैं जो important होती हैं when it comes to body language, right? So see, one important thing that you need to understand for life, to be a great communicator and to maybe crack interviews, to maybe face high pressure tests, to maybe have a better impression on people when you meet them. The thing is that आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है, या आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है. मैंने एग्जांपल दिया था कि जब आप कंधे झुकाते हैं, दैट मीन्स यू आर अंडर कॉन्फिडेंट. इफ योर बैक इज इरेक्ट, राइट, दैट मीन्स दैट यू आर वेरी अलर्ट. इफ यू अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे करके बैठे हैं, that means that you might be an aggressive person. अगर आप हाथ खोल के बैठे हैं, that means that you might be open to receiving ideas. So different postures and different ways in which you place your hands, your legs, your head, your neck, your torso mean different things, and people who are experts in body language, people who are interviewees know all these things. So जाने अनजाने में, because we don't control a lot of our posture, right? हमारी आदत पड़ जाती है, बहुत लोगों की आदत होती है झुक के बैठने की, तो वो हमेशा झुक के बैठते हैं, but that might indicate that you are an underconfident person to somebody in an interview. So we ourselves are not aware of the posture that we keep, we ourselves are not aware of the body language that we keep, and unconsciously we keep communicating, we keep giving, signs to people about the kind of people we are. So posture is a very important part of body language. Once we are done with the elements, I am also going to teach you a proper body language, especially when you are facing interviews or when you are sitting in a formal structure. तो एक proper body language कैसी होती है और आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी body language को correct या improve करने के लिए. The most important part of body language is eye contact, even more important than posture. आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब हम क्लासरूम में बैठते हैं, अगर आप बहुत पीछे बैठे हैं और बहुत बड़ा क्लासरूम है और अगर आपको टीचर नहीं दिख रहा है, यानी कि आप टीचर से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लास में समझ नहीं आती. ऑन द अदर हैंड, if you are sitting face to face with the person and you can make eye contact and have a face to face conversation, तो ज़्यादा समझ में आता है वो conversation. That is why face to face conversations are always better than telephonic conversations or conversations on messages. अक्सर लोगों को सुना होगा कि अरे इम्पोर्टेंट बात करनी है, मिल के बात करते हैं. वो मिल के बात इसलिए करते हैं क्योंकि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट होता है, एंड आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज. इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो आपका मिनिमम 60 to 70% आई कांटेक्ट होना ही चाहिए. अगर आप नर्वस होंगे और आप इधर उधर देखेंगे, या आप like a lot of people, especially when you're talking on camera or especially when you're giving an interview, you are nervous. You look idhar udhar, you look side mein, you look upar, especially when you are performing in public and you are giving a public speech. It's very hard to maintain eye contact with the audience because you have to look at the entire audience. So the mistake that we make is, अगर हम स्टेज पे हैं और हमारे सामने ऑडियंस है तो हम सिर्फ एक इंसान से आई कांटेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर वी गेट फिक्सेटेड एंड वी आर नॉट एबल टू मेक आई कांटेक्ट विद द एंटायर ऑडियंस, एंड दैट इज व्हाट makes the difference between a good speaker and a bad speaker in a public setting. So eye contact, in short, is very important when it comes to body language, when it comes to public speaking, when it comes to giving interviews, when it comes to being a good communicator. Another element of your body language is gestures. Gestures का मतलब होता है कि बोलते समय आप अपने हाथों का
अपने फिंगर्स का, अपने हैंड्स का, और कभी कभी अपने पैरों का, अगर आप खड़े हैं तो आप अपने लिम्स का कैसे यूज़ करते हैं। आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे दो चीज़ों को कंपेयर करना है, मैं आपको समझा रही हूँ कि मास और एक्सेलरेशन का फोर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो इफ आई से कि मास एंड एक्सेलरेशन जब बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ जाता है, और मास और एक्सेलरेशन जब घटता है तो फोर्स भी घट जाता है, राइट। सो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू ए डिफिकल्ट टॉपिक with the help of hand gestures, that becomes easy, right? So hand gestures are an important part of your body language. Same goes for the gestures that you do with your legs or that you do with your feet. जैसे अगर आपने पब्लिक स्पीकर्स को देखा हो, तो जो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उनके पास बहुत बड़ा स्टेज होता है, और वो कभी भी स्टेज पे एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं। वो ऑडियंस के पास आते हैं, कभी कभी वो स्टेज से नीचे आ जाते हैं, वो पूरा स्टेज कवर करते हैं। अगर आपने एक्टर्स को देखा हो जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो पूरा स्टेज कवर करते हैं। सो दे यूज देयर फीट, they use their legs to cover the entire stage, and that is also an important part of body language, right? So these are some elements, some और भी काफ़ी elements होते हैं, हम उनके बारे में और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, but these are some very important elements of body language. They are personal appearance, facial expressions, head, posture, eye contact, and gestures, right? ना बॉडी लैंग्वेज के क्या एडवांटेज होते हैं। सी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बॉडी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। बॉडी लैंग्वेज से आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगता है, आपकी साइकोलॉजी के बारे में पता लगता है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता लगता है। बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजन अबाउट जजमेंट रिगार्डिंग पीपल। But you know, what are the advantages? What are the other advantages of body language? See, सबसे पहला advantage तो ये है that body language is a good supplement to verbal communication. यानी कि जब आप बोलते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप verbal communication कर रहे हैं तो आप non verbal नहीं करेंगे। आप verbal और non verbal एक साथ करते हैं 90% of the time. Whenever you are speaking, you're also using your body to communicate to people. So body language is a good supplement to your oral messages, to your verbal communication, right? Body language is also, you know, it makes the communication more interactive. जैसे अगर मैं बिल्कुल स्टैचू की तरह आपको कैमरे पे फ्रीज होके लेक्चर दूँ तो शायद से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट बिकॉज आई एम मूविंग, आई एम यूजिंग माई हैंड जेस्चर्स, आई एम चेंजिंग माई टोन, आई एम यूजिंग माई हेड, आई एम using my fingers, can't use my feet because you can't see it. So it body language enables you to establish a good relationship between the sender and the receiver, and it also makes the communication more interactive, right? It also helps you convey कि आपका exact message क्या है। जैसे for instance, अगर मैं आपको बोल, okay, I'll give you an example. I'll give you a live example. If I say, oh, I feel great, but if I say, oh, I feel great, like I feel great, so ज़्यादा फीलिंग किससे आई? मैंने स्टैचू की तरह आई फील ग्रेट बोला उससे आई, या मैंने बोला आई फील ग्रेट, यू नो, या ये थम्स अप वाली बॉडी लैंग्वेज से आई? सो बॉडी लैंग्वेज का ये एडवांटेज होता है that it makes the communication more effective in the sense it generates more interest, it generates more meaning, it establishes a better relationship, right? रिसीवर को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और जो मूड है स्पीकर का और ऑडियंस का वो भी एलिवेट हो जाता है, बिकॉज यू आर यूजिंग द एंटायर बॉडी टू कम्युनिकेट विद समवन। So those are the advantages of body language. However, हर चीज़ की तरह बॉडी लैंग्वेज के भी लिमिटेशंस होते हैं। बॉडी लैंग्वेज के ये लिमिटेशंस होते हैं कि जब बहुत
लार्ज गैदरिंग्स होती हैं तब बॉडी लैंग्वेज इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव. लाइक फॉर इंस्टेंस, जैसे इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट? अगर आप अपने कैमरे भी सारे ऑन कर लें और मैं आपको कैमरे पे भी देख पाऊँ, तो I will not be able to understand your body language because there are a lot of people, right? So I cannot focus on everybody's body language through the camera. So body language has that limitation. Now body language is not, uh, you know, it is important at a lot of places, but it is not very important at a lot of places. अगर आप कोई informal communication कर रहे हैं अपने friend के साथ, तो वहाँ पे body language नहीं matter करती, right? वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, आप अगर अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं तो आप उसके गर्दन पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि और बताओ क्या चल रहा है. यू कैन नॉट डू दैट विद योर बॉस, राइट? दैट्स नॉट द सेम बॉडी लैंग्वेज दैट यू विल यूज विद योर प्रोफेसर और विद योर बॉस. सो it's not taken seriously at every step in every kind of space. That is limitation. Then body signals का different cultures में different मीनिंग होता है, तो वो मिस इंटरप्रेट भी हो सकते हैं. मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं ऐसे करूँ तो इट्स अ साइन ऑफ ग्रीटिंग इन इंडियन कल्चर, बट इफ आई गो टू सम अदर कंट्री दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. They would probably think that I may be praying. So that's the limitation. Body language can only work if you can see the person, right? Like I said, I cannot see you, so I cannot I cannot understand what your body language is. If there's a blind person, the person cannot see whatever body language you're using. तो उसके visibility के limitations हैं, उसके culture के limitations हैं. Body language has its own limitations. However, professional settings में, high pressure settings में, body language is extremely important. I understand that you had a lot of network issues in between. So अगर किसी को कोई doubt है तो पूछिए. If you have any doubts, you can ask them. We'll take 5 minutes and then we'll continue with the other topics. So कोई doubt है तो please chat box में पूछें इससे पहले कि हम आगे बढ़े, because body language is very important topic. उसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए. So about the material that I use, it's a collection of PDFs that I've collected over the years. It's not one specific source. It's a collection. Nikita is asking कि क्या face expressions भी gestures का part होता है? Face expressions भी gestures का part होता है. आप कुछ भी convey करते हैं अपने body के through, बॉडी के किसी भी पार्ट के थ्रू, तो वो जेस्चर्स में ही आता है. Alright, I don't see any more questions related to body language, so I am going to continue. So ये तो हुआ body language. Body language is an extremely important topic, and a lot of students ask me that इसको हम कैसे पढ़ें? How do we understand or study this topic? So body language is not a very theoretical topic. It's a very conceptual topic. You have to understand the concepts behind body language in order to answer the questions in the exam as well. And not just exams, because आपको तो जिंदगी भर लाइक इंटरव्यूज देने हैं, करियर बनाना है, प्रोफेशनल लाइफ में आप होंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे. सो बॉडी लैंग्वेज इज गोइंग टू, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज गोइंग टू बी यूजफुल देयर ऑल्सो. Before we move forward, I would like to tell you a little bit about कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे करेक्ट कर सकते हैं. So the most popular system for correcting body language is that we follow is called the solar system.
SOLER, solar system. uh, S stands for square body language. Square body language का मतलब क्या होता है? Square body language का मतलब होता है your back, whenever you are sitting, your back is erect. Your shoulders are not bent. Your shoulders are in alignment with your neck. Your hands are either placed in your lap, right? Your hands should not be like this, like your hands should not be like this. अब वो chest के across fold नहीं होने चाहिए. Your hands should not be like this. Your hands should be placed in your lap. Um O stands for open body language. Open body language means an alert body language. Um, um, L stands for lean forward. That means that um, let's say if somebody says something, right, and you are not able to hear it, maybe you can lean a little forward and you can say, "Can you repeat that, please?" You know, "Oh, I'm so sorry, I wasn't able to understand what you said. There are some volume issues. Yeah, can you please be more audible?" So, leaning forward and politely asking someone to repeat themselves is a good sign of body language. That means that you are paying attention, and if you have some problem, you can also convey it to the other person, right? E stands for eye contact. Eye contact is very important. And R stands for a relaxed body language. Whenever you are giving interviews or whenever you are doing something that involves some sort of pressure, you tend to get very nervous, and वो आपके चेहरे पे दिखता है. क्या signs होते हैं nervousness के? पहला sign होता है frown, you know, like if someone is talking to you, you will frown and tell them things. You will try to concentrate hard. So this frown, these lines on the forehead, that should not be there. That's not the sign of a good body language. You should have a slight smile. ऐसा भी नहीं कि आप बहुत हंस रहे हैं, but हाँ, you should have a slight smile while talking to people. That shows that you are relaxed. You're not very nervous. Um, a lot of people, especially when I have taken interviews, as I see a lot of people, you know, playing with their rings, or I see a lot of people playing with their fingers, like breaking their fingers. They'll do this or they'll do this, you know. So that is a sign of nervousness and anxiety. That doesn't look very well. So your hand gestures can be very composed. You know, अगर आप जिसे interview दे रहे हैं, तो you cannot make a lot of wild hand gestures. What you can do is you can keep your hands like this. I don't know if you can see it. That's called the steeple pose. It's called the steeple position, right? So you can keep it like this. You can keep it like this. You can maybe keep it like this, right? So these are some signs of a good body language, especially when you're sitting. You usually give your interviews while sitting, so I'll give you more tips on a sitting body language, a sitting body posture. ये तो हो गया hands and आपका upper body. When it comes to your lower body, you know, and this is not a part of your course, it's not in your book. I am just giving you tips so that you can understand body language better and you can, you know, use it in your life. So a lot of people have this habit. जब वो नर्वस होते हैं तो वो अपना फीट टैप करते हैं, यू नो, लाइक वो ज़मीन पे फीट टैप करते हैं. दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड बॉडी लैंग्वेज. योर फीट शुड नॉट बी वेरी फार अपार्ट. जैसे घर पे जब आप सोफे पे बैठते हैं या चेयर पे बैठते हैं तो आप बड़ा रिलैक्स होके ऐसे पीछे हाथ करके पीछे होके पैर फैला के बैठते हैं. दैट्स नॉट द वे यू सिट इन एन इंटरव्यू, राइट? योर body has to be aligned. Your body has to be erect and straight. So these are some important tips to keep in mind. Like when you're using your hands, when you're using hand gestures, do not point your fingers. Like don't do this, don't do this. That's rude. When you are giving interviews, do not touch your neck a lot because that shows that you are nervous. Do not play with your hair a lot. A lot of people do this, that when they are talking, they do this, right? They play with their hair. Yeah, a lot of men, a lot of boys, they will constantly, like, you know, like touch their hair. They'll constantly
set their hair. So if you're touching your hair, if you're touching your neck, if you're touching your face too much, it's just not a good sign of body language, right? You can just be composed, you can just have a very calm, a very alert posture, and that's it. बहुत लोगों की आदत होती है, क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हैं फॉर्मल सेटिंग में, तो जो चेयर्स हैं वो थोड़ी कंफर्टेबल होती हैं, तो a lot of people like lean back, a lot of people sit back, मतलब वो पीछे होके बैठ जाते हैं, या a lot of people get nervous and वो बहुत आगे होके like they lean on the table, a lot of people place their elbows on the table. If there is a table between you and the interviewer, right? So don't do that. That is again not good body language. So these were some tips. These were some tips about body language, which are going to be very useful for you, especially when you are giving interviews or when you are attending group discussions, or you are in any professional setup or environment, right? A lot of people are asking me about the class and the subject. Vishnu and Jaya, this is an AECC class. I don't know if you're in the wrong or the right class. It's an English AECC class. Okay. So this was all about body language. Now let us come to another very, very important part of non-verbal communication, that is paralanguage. Now, a lot of students get confused when it comes to paralanguage. I'll try to explain it in as simple terms as I can. What is paralanguage? Paralanguage is an important part of non-verbal communication. What does paralanguage do, or what is basically paralanguage? See, एक तो होता है आप जो कंटेंट बोल रहे हैं, या आप जो शब्द बोल रहे हैं, या अपनी बॉडी का यूज करके जो भी कुछ बोल रहे हैं, राइट? एक तो होता है आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट, द व्हाट ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, राइट? एक होता है आप उसको कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, हाउ आर यू सेइंग व्हाटएवर यू आर सेइंग. सो द हाउ पार्ट इज द पैरालैंग्वेज. आप जो बोल रहे हैं उसको कैसे बोल रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ है, इसको हम पैरालैंग्वेज बोलते हैं. जो फील्ड इस चीज़ को स्टडी करती है, यानी कि पैरालैंग्वेज को, यानी कि जिस तरीके से आप चीज़ों को बोलते हैं, हाउ यू से समथिंग, उसको हम पैरालिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, राइट? आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस, हिंदी में समझाऊंगी मैं. अगर मैं बोलूँ क्या कर रहे हैं आपको समझ नहीं आता, और तुम्हें बोलूँ अरे क्या कर रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या, और मैं बोलूँ क्या कर रहे हो यार, मतलब तुमको समझ ही नहीं आता है. So I said the same thing, right? I did not change my words. I said the same sentence. It had the same meaning, but it was spoken in three different ways. The first one, can you identify the emotion? Can you identify the differences? In तीनों तरीकों में क्या differences थे? Can you type it in the chat box? अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक सेंटेंस को तीन तरीकों से बोलना, क्या आपको क्या समझ आया, क्या डिफरेंस था उसमें? Type it in the chat box so that I can know. Right. So the first one was an anger, गुस्से में था. जो सेकंड वाला था वो थोड़ा प्यार से. जो थर्ड वाला था वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए, जब आप बिल्कुल थक हार जाते हैं तो वो तब था, यू नो. सो चीज़ वही थी, उसको बोला बहुत अलग तरीक़ों से गया. क्या डिफरेंस आया उसमें? इमोशन का डिफरेंस था. मैंने जिस तरीके से अपनी वॉइस को पेस किया, वॉइस को चेंज किया, उसका डिफरेंस था. वॉल्यूम का डिफरेंस था, स्पीड का डिफरेंस था,
तो ये जो चीज़ है कि आप जो बोलते हैं उसको किस तरीके से बोल रहे हैं, उसको हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ना पैरा लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा लैंग्वेज के क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो पैरा लैंग्वेज या पैरा लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका वॉइस क्वालिटी, मतलब वॉइस क्वालिटी का मतलब हुआ कि आपकी जो सी एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वॉइस क्वालिटी। जैसे लता मंगेशकर हैव अ वेरी स्वीट वॉइस, उषा उत्थुप हैव अ हेवी वॉइस, हिमेश रेशमिया हैज अ नेजल वॉइस, Shankar Mahadevan has a very melodious voice. Honey Singh has, I don't know, no comment. बट यू गेट माई पॉइंट दैट हर किसी की वॉइस की क्वालिटी बहुत अलग होती है। किसी की बहुत मीठी आवाज़ होती है, किसी की बहुत तेनी आवाज़ होती है, किसी की आवाज़ चुपती है, राइट। तो आपकी वॉइस की क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है पैरा लैंग्वेज का। आपका स्पीकिंग स्टाइल यानी कि आपके बोलने का स्टाइल। अगर मैं इसी चीज़ को बहुत स्पीड में बोलूँ तो शायद से आपको समझ में ना आए, या फिर आपको समझ में आए, दैट डिपेंड्स ऑन मेरे बोलने की स्पीड और आपकी समझने की स्पीड। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा कम स्पीड में बोलूँ, थोड़ा प्यार से आराम से बोलूँ, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ऑफकोर्स वो आपकी समझने की और मेरे बोलने की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो द फर्स्ट वन वॉज वेरी फास्ट, द सेकेंड वन वॉज वेरी स्लो। तो मैं किस स्पीड से बोल रही हूँ। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं। एक मेरी स्पीड क्या है, एक्सेंट का मतलब जैसे अगर आप बिहार में जाएंगे तो लोगों के बोलने का एक्सेंट जो है वो बहुत अलग है। हिंदी ही बोलेंगे, अलग तरीके से बोलेंगे। अगर आप यूपी में जाएंगे, लेट्स से लखनऊ आएंगे, तो पीपल विल स्पीक वेरी स्वीटली। आई से दिस बिकॉज़ आई एम सिटिंग इन लखनऊ राइट नाउ। सो उनका एक्सेंट बहुत अलग होगा, यू नो, लाइक दे हैव अ वेरी डिफरेंट एक्सेंट। अगर आप साउथ में जाएंगे और वहाँ पे कोई हिंदी बोलेगा तो उनका एक्सेंट बहुत अलग होगा। तो यानी कि आपका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो जिन आप शब्दों को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स योर एक्सेंट। देन आपकी वॉल्यूम, कोई बहुत लाउडली बोलता है, कोई बहुत धीरे बोलता है। आपके वॉइस का टोन, यू नो, is it an angry tone, is it a questioning tone, is it a sing song tone। जैसे बचपन में हम जब टीचर को ग्रीट करते थे तो वी यूज्ड टू बी लाइक गुड मॉर्निंग टीचर, so that's a sing song tone, right। if I say good morning, that's a different tone। रिदम क्या है, रिदम अगेन आई सेड कि वो सिंग सॉन्ग टोन। आप पॉजेस कितना लेते हैं, राइट। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं 3-4 सेंटेंस बोल रही हूँ और मैं उसको बिना पॉज पे एक साथ बोल दूँ तो फिर इट माइट नॉट बी दैट इफेक्टिव। बट अगर मैं 3-4 सेंटेंस बोलती हूँ और मैं बीच बीच में थोड़े पॉज लेती हूँ, थोड़ा टाइम देती हूँ, तो इट वुड हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट, राइट। Modulation, your voice modulation. Now voice modulation is a very important part of para language। वॉइस मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस। You know, there are a lot of people in the world who just don't have the privilege that we have। They are not born rich, they don't have access to education, they don't have access to a good internet connection, and we take that for granted। We do not realize how much privilege we have। So the tone that is changing during these sentences, the tone that just changed, that is your voice modulation। मतलब आप जो भी बोल रहे हैं उसमें आपकी टोन कैसी होती है, उसमें आपकी टोन कितनी चेंज होती है, दैट इज़ योर वॉइस मॉड्यूलेशन। मतलब अपनी वॉइस को आप कितना मॉड्यूलेट करते हैं, टोन में कितना उतार चढ़ाव, कितना चेंज आता है, दैट इज़ योर मॉड्यूलेशन। फ्लुएंसी का मतलब आपकी लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है, आप उसको कितनी अच्छी तरीके से फ्लुएंट तरीके से बोल पाते हैं, दैट इज़ योर फ्लुएंसी। Intonation and stress is also an important part of para language। Now, I'll give you an example। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो अभी के अभी अच्छे से समझ में,
तो मैंने जो ये सेंटेंस बोला, मैं जो पढ़ा रही हूँ अभी के अभी अच्छे से समझ में, इसमें किस पर स्ट्रेस था? ये पूरा सेंटेंस पे तो स्ट्रेस नहीं था, कुछ शब्द थे जिन पे स्ट्रेस था, राइट? उन पे मैंने स्ट्रेस क्यों किया? सो दैट उसकी इम्पोर्टेंस, उन शब्दों की इम्पोर्टेंस आपको समझ में, राइट? लाइक द अर्जेंसी दैट इट डिनोट्स, कि अभी के अभी समझें, बिकॉज दिस लेक्चर विल नॉट बी रिपीटेड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट बी एबल टू totally understand by reading it because it's a very practical paper. So जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं बोलने के तरीके के, आपका टोन ऑफ वॉइस, आपका वॉल्यूम, आपका पेस, आपका वॉइस क्वालिटी, आपका किस वर्ड पे आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, अपनी क्या पॉजेस दे रहे हैं, सेंटेंसेस में कितने ब्रेक ले रहे हैं, सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दीज आर, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर व्हाट पैरा लैंग्वेज इज ऑल अबाउट. पैरा लैंग्वेज में और भी छोटे छोटे क्यूज आते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई अगर रोते रोते बोलता है, यू नो, कोई अगर हंसते हंसते बोलता है, कोई अगर विस्पर करके बोलता है, कोई साय करता है या ग्रोन करता है. So these are also part of para language because they convey a lot of emotions. कोई रो के बोल रहा है, that means the person is sad. कोई हंस के बोल रहा है, that means the person is very happy. So these convey emotion in your communication, and that is why they are part of para language. तो आई होप यू अंडरस्टूड कि पैरा लैंग्वेज क्या होती है. हमने आज अभी तक दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं. एक है बॉडी लैंग्वेज और उसके एलिमेंट्स, एक है पैरा लैंग्वेज और उसके एलिमेंट्स, राइट? नाउ लेट अस कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आप लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, राइट? बिना लैंग्वेज के तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. आप अगर वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तो आप या तो हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे या फ्रेंच में बात करेंगे या जर्मन में बात करेंगे, मतलब कोई ना कोई एक लैंग्वेज होगी. अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप साइंस में बात करेंगे, आप जेस्चर्स में बात करेंगे, आप अपनी बॉडी का यूज़ करके बात करेंगे. पर उसके अलावा, मतलब जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी खुद की ज़ुबान होती है, जिनकी खुद की लैंग्वेज होती है. तो लेट अस लुक एट दैट. So the first thing that we are going to look at is called proxemics. Proxemics जो शब्द है वो proximity से आता है. Proximity का मतलब होता है nearness, मतलब डिस्टेंस कितना है एक जगह से एक जगह का. बेसिकली प्रॉक्सिमिक्स, अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊँ तो प्रॉक्सिमिक्स का मतलब लैंग्वेज का वो एस्पेक्ट, लैंग्वेज की जो फील्ड जो ये स्टडी करता है. कैन यू सी माय स्क्रीन? नो यू कांट. नाउ यू कैन सी इट. हाँ, तो वो फील्ड जो ये स्टडी करता है कि कम्युनिकेशन पे स्पेस का क्या फ़र्क पड़ता है, दूरी का क्या फ़र्क पड़ता है, उसको हम प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं. ठीक है. अब आप ये सोचेंगे कि दूरी का क्या फ़र्क पड़ सकता है कम्युनिकेशन पे, मतलब कम्युनिकेशन तो वर्ड्स का यूज़ करके होता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके होता है. कौन कितना दूर है, कौन कितना पास है, क्या स्पेस है जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? टर्न्स आउट उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. So if you look at this diagram, you know, there are different spaces of communication. Just look at this diagram very carefully. There are different classifications of space. एक होता है आपका intimate space. ठीक है. इंटीमेट स्पेस का मतलब हुआ जिसमें जो आपका सबसे, जिसमें आपके सबसे क्लोज लोग होते हैं, बहुत गिने चुने लोग, यानी कि या तो आप सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स
जिनसे आप क्लोज हैं या जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो होती है आपकी इंटीमेट स्पेस। आपकी कौन सी स्पेस में क्या लोग आते हैं वो डिटरमाइन करता है कि आप किससे कैसे बात करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, क्या आप अपने पड़ोसी से भी वैसे ही बात करते हैं जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं? नॉट एट ऑल। क्या आप अपने फादर से या मदर से वैसे ही बात करते हैं जैसे आप अपने प्रोफेसर से बात करते हैं? नॉट एट ऑल। आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीक़ों से बात करते हैं। आपके बात करने का जो कंटेंट है वो भी अलग होता है। हो सकता है कि आप अपने पड़ोसी को अपने सीक्रेट्स ना बताएं, लेकिन अपने सीक्रेट्स अपने बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर बताएंगे। हो सकता है कि आप माँ बाप से ज़िद कर लें, माँ बाप से लड़ लें, लेकिन आप अपने बॉस से नहीं ज़िद करेंगे, आप अपने प्रोफेसर से नहीं लड़ेंगे, राइट? सो हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसका आपकी स्पेस उस पर आपकी स्पेस का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी जो इंटीमेट स्पेस है उसमें आपकी उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अलग होता है, अलग तरीके से होता है, अलग लोगों से होता है, अलग बातों पे होता है। फिर आती है उसके बाहर आपकी पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस में जिनको आप पर्सनली जानते हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके कोवर्कर्स, ये सब आते हैं। आप अपने कॉलेज की बातें अपने क्लासमेट से करते हैं, राइट? लेकिन जो आपका चड्डी बड्डी है उससे उतनी नहीं करते। फिर आता है आपका सोशल स्पेस। सोशल स्पेस में आते हैं आपकी सोशल रिलेशनशिप्स, आपके ऑफिस के लोग, आपके प्रोफेशनल लोग, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जो आपकी सोशल लाइफ को कंसिस्ट करते हैं। एंड देन द मोस्ट आउटर स्पेस इज पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में कोई भी आ सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो मेट्रो में आपके कंपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो आपकी पब्लिक स्पेस में हैं। उसमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अलग होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस, इन योर इंटीमेट स्पेस यू कैन चूज हु यू वांट टू टॉक टू। बट अगर कोई मेट्रो में आता है और आपसे पूछता है कि मेट्रो कहाँ तक जा रही है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन दैट यू चूज। उन्होंने एक सवाल पूछा जिसका आपने जवाब दिया, राइट? सो दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट यू विल हैव इन अ पब्लिक स्पेस, वेर यू मीट द पब्लिक, वेर यू मीट पीपल पब्लिकली एंड यू कम्युनिकेट विद पीपल पब्लिकली। So basically, to revise again, what is proxemics? Proxemics is the field which studies the effect or the impact of space or distance on your communication. You have different spaces में different तरीकों से communication होता है। I'll give you another example. जैसे जब कोविड नहीं था और हम फिजिकल क्लासेस अटेंड करते थे, तब जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता था, या तब जो जैसे मैं पढ़ाती थी या जैसे आप पढ़ते थे, वो काफ़ी अलग था, राइट? लाइक बहुत सारी चीज़ें थी जो एडवांटेजेस थी। एक क्लास में 600 स्टूडेंट्स नहीं आ सकते थे जैसे अभी आ सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो कम स्टूडेंट्स होते थे उनसे ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता था फेस टू फेस, राइट? यू कैन आस्क मी फेस टू फेस क्वेश्चन, जो अभी नहीं हो सकता है। So that has completely changed the way we talk and the way we communicate, right? And the way we learn and teach. So space का और distance का काफ़ी फर्क पड़ता है आपके communication पे. And that is what proxemics is all about. So ये तो हो गया space का क्या फर्क पड़ता है communication पे. उसके बाद फिर हम आते हैं chronomics पे. Now क्रोन का मतलब होता है टाइम, क्रोनोलॉजी मीन्स द टाइम लाइन। आई एम नॉट गेटिंग अदर वर्ड्स जिनमें क्रोन आता हो, पर बेसिकली जिसमें भी क्रोन आता है उसका मतलब होता है टाइम। तो बेसिक क्रोनोमिक्स इज दैट स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच डिटरमाइंस की या विच स्टडीज की टाइम का लैंग्वेज पे क्या फ़र्क पड़ता है, या टाइम का कम्युनिकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? Another very small example, I'll give you 3-4 examples और उसके थ्रू मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो अगर आपको किसी से अर्जेंट बात करनी है, बहुत अर्जेंट बात करनी है, तो क्या आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे क्या, या आप उसको सीधा कॉल करेंगे? आप उसको सीधा कॉल करेंगे, राइट? क्योंकि आपको अभी के अभी बात करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हो सकता है वो 1 घंटे बाद दिखे,
हो सकता है वो 2 घंटे बाद देखे, हो सकता है वो पूरे दिन में रात को फ्री होके देखे आपका मैसेज, राइट, और वो अर्जेंसी लूज हो जाएगी। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको कॉल पे बात करनी है या आपको मैसेज पे बात करनी है, आपको ओरल कम्युनिकेशन करना है या आपको रिटन कम्युनिकेशन करनी है? आपने टाइम के हिसाब से डिसाइड किया, राइट, कि कितना टाइम है आपके पास वो चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए। अनदर एग्जाम्पल, जैसे फॉर इंस्टेंस आप कब को मेल करता है कि ये असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट आज की आज ही आपको सबमिट करना है, और अगर आपने आज के आज सबमिट नहीं किया तो आप के मार्क्स डिडक्ट होंगे, राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसी दिन सबमिट कर देंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद सबमिट करेंगे, राइट। सो आपने कितने टाइम में कितना काम किया, उससे क्या पता लगता है आपकी रिलायबिलिटी, आपकी सिंसेरिटी, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आप कितने बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, आप की हैबिट्स क्या हैं, आप टाइम को कितना वैल्यू करते हैं। आपने मुझे अपने बारे में बताया नहीं, बट आपने कितना टाइम दिया। मैंने जो आपको कम्युनिकेशन बोला वो करने के लिए, उससे आपके बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता लगा। सो दिस इज द इम्पैक्ट दैट टाइम हैज़ ऑन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, राइट। अगर आप किसी को बोलते हैं कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर पता करके बताइए कि ये काम कैसे होगा, और वो अगर 1 घंटे के अंदर आपको बता देता है, दैट मीन्स द पर्सन इज रिलायबल। अगर वो 1 घंटे के अंदर नहीं बताता है, दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट रिलायबल, मे बी नॉट वर्थ योर टाइम एंड वर्थ योर कनेक्शन. So this is the impact that time has on language and communication, and the field which studies that is called chronology, right? The third kind of language is haptics or touch language. Touch की भी एक language होती है, right? Touch की language कैसे होती है? आप किसी को हग करते हैं, आप किसी की पीठ थपथपाते हैं, आप के हाथ किसी से हाथ मिलाते हैं, आप किसी के सर पे हाथ रखते हैं। तो ये जो जेस्चर्स हैं हमारे, हम किसी को टच करके उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। वी हैव लिव्ड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हैप्टिक्स ऑफ और टच लैंग्वेज। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे कल्चर में ये रिवाज है कि जब भी बड़े घर पर आते हैं, बड़े बूढ़े, तो हम उनके पैर छूते हैं, उनके पैर छू के वी डोंट टेल देम वर्बली दैट आई रिस्पेक्ट यू सो मच और आई लव यू सो मच, या आई नीड योर ब्लेसिंग। वी डोंट से दैट, nobody says that, but we touch their feet and that is how we convey our respect for them. And वो क्या करते हैं, वो हमारे सर पे हाथ रखते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, राइट। सो दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ टच। जब आप कुछ कहते नहीं हैं, बट आप टच से भी बहुत सारी चीज़ें कन्वे कर देते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस I'll give you another personal example. So my dad is a typical Indian dad. He does not express much. वो बहुत ज़्यादा express नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार नहीं जताते, right? But whenever I do something that he likes, or whenever I do something that makes him proud, he pats my back. So and that is how I know that, that is how he conveys his emotions to me, even without expressing uh, a lot in words. So that is how you communicate with people using touch. Another example, let's say a friend of yours loses a loved one, किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में, और कोई बहुत पेन में है, कोई बहुत ग्रीफ में है, कोई बहुत दुखी है, उस लॉस को नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो सी वर्ड्स की भी लिमिटेशन होती है, राइट। आप उससे ऐसा क्या ही कह देंगे, आप उससे क्या ही एडवाइस कर देंगे, कि आप इतने कितने समझदार हैं, आप इतने कितने ही अच्छे कम्युनिकेटर क्यों ना हो, कभी कभी शब्द भी कम हो जाते हैं। यू कैन नॉट रियली से एनीथिंग दैट कैन express your sympathy, your empathy for the other person. But maybe you can not say anything and you can hug them, right? Because that's more comforting
than words. So words have their own limitations, and touch doesn't, and that is why touch is also a very, very, very important part of non-verbal communication, right? Apart from space, apart from distance, apart from time, apart from touch, there is sign language. Sign language is basically, I gave you an example in the previous lecture. That's sign language, right? Or if I say that's sign language, right? So जब आप साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, जैसे अगर मैं ये करूँ, दैट मीन्स अ विक्ट्री साइन. मैं ये करूँ, दैट मीन्स आई डोंट लाइक इट. अगर मैं ये करूँ, दैट मीन्स गिव मी अ स्माइल. सो साइंस की भी अपनी लैंग्वेज होती है. Even for people who can hear and can speak, who are privileged enough to have all our senses, sign language is also a very important part of our day-to-day communication, right? For people who cannot hear or cannot speak, उनकी अपनी एक अलग ही साइन लैंग्वेज होती है. साइन लैंग्वेज सिर्फ जेस्चर्स में नहीं, बट पिक्चर्स के थ्रू, आप पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप सिंबल्स के थ्रू, आप पोस्टर्स के थ्रू. मैंने एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं तो एक बर्गर की बड़ी सुंदर सी फोटो होती है, और अगर आपने रिजॉल्व भी किया है कि मैं कोई जंक फूड नहीं खाऊंगा दिस ईयर, तो भी आपका रिजॉल्व टूट जाता है वो पिक्चर देख के, राइट? बिकॉज सिंबल्स एंड साइंस आर एक्सट्रीमली पावरफुल व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन. Then there is silence. Silence is often underrated. It's often misunderstood, very grossly misunderstood as a part of communication. But silence also has its own language, right? This is, for instance, so when I feel very angry, or when I feel very hurt, or when I feel very overwhelmed with emotion, I cannot speak. So I go silent. You know, it's just, and it also has a language. अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपसे ये कन्वे कर रहा है ना कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता. वो या तो आपसे गुस्सा है, या तो आपने उसको हर्ट कर दिया है, या तो वो डरा हुआ है. कभी कभी लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी चुप हो जाते हैं. तो silence also conveys a lot of emotions like fear, respect, shyness, disgust, sadness, disagreement, ignorance. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको समझ आया और कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है चैट बॉक्स में, दैट मीन्स कि maybe you're not, like, nobody is there in the class, nobody is paying attention. So silence also communicates a lot of things without the need of words, and silence also has its own language. So basically अभी ये यूनिट हमारा खत्म होता है, यूनिट 3. We covered body language and its elements, we covered paralanguage and its elements, we covered different types of language like chronemics, proxemics, sign language, haptics, silence, right? So what we are going to do is we are going to take a short 10-minute break. अभी 11:10 हो रहा है. Let us meet at 11:20. You can take a water break, you can go to the washroom, and then let's come back at 11:20 and continue with unit 4. We are going to study more important topics अभी. And अगर कोई डाउट है इन द मीन टाइम इस ब्रेक में, तो उसको चैट बॉक्स में टाइप करें, राइट? I'll see you in 10 minutes. All right, everybody, let us come back from our break. So now we are going to start unit 4. यूनिट 4 में हम बेसिकली पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में. मैंने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि कम्युनिकेशन को क्लासिफाई करने के बहुत तरीके होते हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि वन वे और टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है.
अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हमने पढ़ा कि वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी फॉर्मल सेटअप के अंदर एक डेजिग्नेशन की हैसियत से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आपको कोई डेजिग्नेशन होता है तो उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये फ़र्क होता है, अगर उसको बहुत रफली देखें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादातर फ्रेंड्स के बीच में होता है, या जिन लोगों से आप फॉर्मली कनेक्टेड नहीं हैं उनके बीच में होता है। आप अपनी फैमिली से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, नेबर्स से, दोस्तों से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन आप अपने प्रोफेसर से, बॉस से, अपने कॉलीग्स से फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, राइट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई ऐसी खास हायरार्की नहीं होती, सब एक इक्वल लेवल पे होते हैं, कोई डेजिग्नेशन का डिफरेंस नहीं होता, कोई लेवल्स नहीं होते। फॉर्मल कम्युनिकेशन में लेवल्स होते हैं, डेजिग्नेशंस होते हैं, हायरार्कीज होती हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सब लोग अगर इक्वल पोजीशंस पे भी हो तो भी डेजिग्नेशंस होते हैं। and that is why we are going to study formal communication in more detail, right? So अगर हम formal communication within an organization देखें तो यूजुअली 3 लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहले होते हैं आपके सुपीरियर्स, यानी कि अगर आप मिडिल लेवल पे हैं तो एक होता है आपके सुपीरियर्स, यानी कि आपसे ऊपर की हायरार्की में ऊंचे डेजिग्नेशंस पे जो लोग हैं, या आपके जो सीनियर्स हैं, या आपको जिनको रिपोर्ट करना है, आपके जो बॉसेस हैं वो हो गए आपके सुपीरियर्स, राइट। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं और अगर आप अपने बॉस को या मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं तो वो आपका सुपीरियर ही है, राइट। फिर आते हैं आपके पीयर्स। पीयर्स वो होते हैं जो आप ही के सेम डेजिग्नेशन के होते हैं, या जिस हायरार्की पे आप हैं उसी हायरार्की के होते हैं, राइट। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से दैट I am an assistant professor, right? So if I report to the TIC, that is the teacher in charge, or if I report to the HOD, so the HOD is my superior, I will report to her, right? So the communication that I do with her is going to be very formal. If I talk about fellow teachers, fellow assistant professors, so they are going to be my peers. They are at the same level that I am. They are, but they are in different departments. They are teaching different classes. So, although peer level पे informal भी हो सकता है communication, but जब आप organization के within बात करते हैं तो वो formal होता है, right? फिर होता है आपका subordinate. Subordinates वो होते हैं लोग जो आपसे नीचे की hierarchy पे होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, so if I am the assistant prof, then maybe I don't think students, but let's say if I am the program manager, then the assistant manager is going to be my subordinate. Or let's say if I am a manager in the company, then the janitor is going to be my subordinate. So यूजुअली 3 लेवल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, और उन 3 लेवल्स के हिसाब से आपका कम्युनिकेशन डिटरमाइन होता है कि कैसा कम्युनिकेशन होगा, सुपीरियर्स, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, राइट। नाउ लेट अस लुक एट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हायरार्की के हिसाब से और कम्युनिकेशन के पर्पस के हिसाब से क्या फ्लो बनता है कम्युनिकेशन का। So if you look at this diagram, the first kind of formal communication is vertical communication. Vertical communication, vertical कोई भी चीज़ जो सीधी होती है, ऐसे होती है, that is vertical. ये horizontal होता है, ये vertical होता है, right? तो vertical communication तब होता है जब 2 different hierarchies या 2 different levels के बीच में communication होता है, उसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, अगर एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है, राइट,
तो अगर प्रिंसिपल टीचर से कम्युनिकेट करती है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर सिलेबस में कुछ चेंज होना है या क्लास की टाइमिंग चेंज होनी है और प्रिंसिपल टीचर से बताती है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जो हायर हायरार्की पे है वो लोअर हायरार्की वाले को कुछ बता रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर टीचर प्रिंसिपल से कुछ कम्युनिकेट करती है, यानी कि अगर टीचर को कोई फीडबैक देना है, किसी स्टूडेंट की कंप्लेन करनी है, अपनी कोई प्रॉब्लम बतानी है, तो वो नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन होगा, तो दैट्स गोइंग टू बी अपवर्ड कम्युनिकेशन, राइट? सो द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वर्टिकल। वर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। जब ऊपर से नीचे होता है कम्युनिकेशन, यानी कि हायर से लोअर हायरार्की पे, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। जब नीचे से ऊपर होता है तो वो अपवर्ड होता है, ठीक है? डाउनवर्ड किस टाइप का और कैसे होता है? अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ऑर्डर्स देने हैं, इंफॉर्मेशन देनी है, तो डाउनवर्ड होगा। अगर आपको फीडबैक देना है, सजेशंस देने हैं, कंप्लेन करनी है, तो अपवर्ड होगा, राइट? ग्रीवेंसेस बताने हैं। सो दिस इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कब होता है? जैसे कि मैंने बोला, एक टियर लेवल पे जब सेम हायरार्की में सब होते हैं, सेम लेवल पे सब होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एचओडीज हैं, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी को कुछ पता लगता है और उनको केमिस्ट्री वालों को बताना है, तो केमिस्ट्री वालों को इंग्लिश को बताना है, तो ये जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल, राइट? हॉरिजॉन्टल को साइडवर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल या साइडवर्ड कम्युनिकेशन कब होता है? जब आपस में कोऑपरेट करना होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आई गिव यू अनदर एग्जांपल। आप हॉस्पिटल गए हैं, राइट? मतलब हॉस्पिटल आपको पता होगा कैसे वर्क करते हैं। अगर हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है जिसको 4 बीमारियां हैं, है ना? उसको डायबिटीज़ है, उसको हाई बीपी है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और उसको लेट्स से उसका फ्रैक्चर हो गया है। हाँ, उसका फ्रैक्चर हो गया। ये 4 बीमारियां हैं, ठीक है? और केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो डिपार्टमेंट फ्रैक्चर्स को देखता है, हड्डियों का डिपार्टमेंट, वो उसके केस को रेफ़र करेगा डायबिटोलॉजिस्ट के पास। वो उसकी शुगर टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद वो बीपी वाले के पास जाएगा, उसके बाद वो हार्ट वाले के पास जाएगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो सेम लेवल पे हैं, और अगर पेशेंट को रेफ़र करना है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट को ठीक करने के लिए उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट करना है और टीम वर्क करनी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ हैं, राइट? उनको इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज करनी है। बीपी वाला बताएगा कि इनका इतना बीपी है, तो हार्ट वाला उसी हिसाब से दवाइयाँ देगा। शुगर वाला बताएगा कि इनकी इतनी शुगर है, तो जो हड्डी ठीक करेगा वो उसी हिसाब से ठीक करेगा, राइट? तो उनको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इस पेशेंट की, एंड ऑफ कोर्स सोशल रिलेशंस भी प्रमोट करने हैं, राइट? सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तब होता है जब सेम लेवल पे, सेम हायरार्की पे लोग होते हैं और इन पर्पसेस के लिए उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना होता है, राइट? सो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक और टाइप का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, दैट्स डायगोनल, राइट? जैसे आई गिव यू अनदर हॉस्पिटल एग्जांपल। सो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बीमार हूँ और मुझे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, लेकिन मुझे लेना है लेट्स से न्यूरोलॉजी में अपॉइंटमेंट, ठीक है? बट मैं उसी हॉस्पिटल में किसी पैथोलॉजी वाले को जानती हूँ, तो मैं उन पैथोलॉजी वाले से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करके न्यूरो वालों से मुझे अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए, ठीक है? तो पैथोलॉजी वाले क्या करेंगे? पैथोलॉजी वाले न्यूरो वाले से बात करेंगे
फिर न्यूरो वाले पैथोलॉजी वाले को बताएंगे कि हमारे पास अपॉइंटमेंट कब का है, राइट। तो इधर क्या हुआ, इधर डिपार्टमेंट चेंज हो गया, राइट। जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एक डिपार्टमेंट में हायरार्कीज होती हैं तो वो सीधा या ऊपर होता है या वो हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन जब डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाते हैं, अगर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के किसी सुपीरियर से बात करनी है तो देयर इज गोइंग टू बी अ डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दैट्स डायगोनल। डायगोनल यूजुअली क्यों होता है, डायगोनल यूजुअली तब होता है जब इंट्रा डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम एक डिपार्टमेंट से नहीं सॉल्व हो रही है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाके सॉल्व करवाना है, राइट। या दो डिपार्टमेंट्स को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है डिफरेंट हायरार्कीज पे, तो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल होता है हायरार्की पे डिपेंड करके, हॉरिजॉन्टल होता है जब हायरार्की सेम होती है, डायगोनल होता है जब डिपार्टमेंट्स चेंज होते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे। समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सी, आपका एक तो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। जैसे गिविंग अनदर हॉस्पिटल एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट है जो किसी एक हॉस्पिटल में एडमिट है, उस हॉस्पिटल वालों को उसकी सर्जरी करनी है और सर्जरी की फैसिलिटीज़ नहीं है उस हॉस्पिटल में, तो वो क्या करेंगे, वो उस पेशेंट को रेफ़र कर देंगे किसी दूसरे हॉस्पिटल में। वो दूसरे उनको कागज़ में लिख के दे देंगे कि ये हमारा पेशेंट है, हम इनकी सर्जरी नहीं कर सकते, ये आपके हॉस्पिटल में सर्जरी कराएंगे। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करता है अपनी कोई समस्या सुलझाने के लिए, तो उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं। या फिर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बाहर के कंपोनेंट्स से इंटरेक्ट करता है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास स्विगी का कॉल आता है कि हमारे यहाँ से आपके यहाँ डिलीवरी हुई थी, तो आपका क्या फीडबैक है, आपको कैसी लगी डिलीवरी। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट करता है, कॉम्पिटिटर्स से या फाइनेंसर्स से या मीडिया से या गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करता है, जैसे स्विगी ने अगर 50% डिस्काउंट देना स्टार्ट किया इस मंथ और उन्होंने ट्विटर पे डाला अपने ट्विटर हैंडल पे कि हम आज से 50% डिस्काउंट देंगे, तो ये जो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स से होता है, उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक। देन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है एक पर्सनल लेवल पे जब आपस में लोग बातचीत करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसमें लोग अपने आपस में बातें भी करेंगे। समवन if someone has had a baby, you will ask them that, like, okay, how's your baby doing? If someone अगर आपका कोई क्लासमेट है और उस क्लासमेट के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो आप अपने क्लासमेट से नोट्स के अलावा इन सारी चीज़ों की भी बात करते हैं, राइट। सो दैट्स पर्सनल कम्युनिकेशन। Now let us come to informal communication. Informal communication, as I said, just normal communication which does not have any barriers, does not have any particular flow, does not have any organizational barriers. It's free from all kind of rules, regulations and formalities. That's called informal communication. Usually ये आप अपने informal settings में करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, मे बी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनसे आपकी अच्छी बनती है उनके साथ, राइट। इस टाइप के कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन बोलते हैं, बट ग्रेप वाइन क्या होता है ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे अदर चैप्टर्स में, राइट। सो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल
ठीक है, आई एक्सप्लेन इट टू यू। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में और डिटेल में करेंगे, राइट? ऑलराइट, वर्बल कम्युनिकेशन हमने कल काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, बट जस्ट लेट अस लुक ओवर इट क्विकली बिकॉज आई सेड कि मैं वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पढ़ाऊंगी। वर्बल में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। वर्बल के दो क्लासिफिकेशंस होते हैं वर्बल लैंग्वेज के। एक होता है आपका स्पीच, स्पीच यानी कि जो आप बोलते हैं। एक होता है राइटिंग, यानी कि जो कि आप लिखते हैं। Just let's quickly look, it's not very important, but just let's quickly look at the difference between speech and writing. Speech is vocalized, आप अपने vocals का यूज़ करके communicate करते हैं। Vocals is your, you have vocal cords in your neck which produce sounds, तो आप उसका यूज़ करके communicate करते हैं। Writing is जब आप सिम्बल्स का यूज़ करके, जो भी सिम्बल्स हैं, जैसे हम ए को ऐसे लिखते हैं, बी को ऐसे लिखते हैं, उसका यूज़ करके जब आप कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स राइटिंग। स्पीच के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यानी कि बोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यू शुड नो कि कौन सा शब्द कैसे प्रोनाउंस होता है। उसके एडवांटेजेस ये हैं कि इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है ऑडियंस का। नॉन वर्बल क्यूज भी आप बोलने के साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि बहुत लंबे और कॉम्प्लेक्स मैसेजेस मुश्किल हो जाते हैं पहुंचाना लोगों तक, राइट? राइटिंग के लिए आपको लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। यू हैव टू बी लिटरेट and you have to have the knowledge of language, how to write it and how to read it for writing. राइटिंग का फ़ायदा ये होता है कि वो लंबे टाइम तक रहता है, इट कैन बी स्टोर्ड। शेक्सपियर ने 500 साल पहले जो प्लेस लिखे थे वो आज भी है, राइट? उन्होंने क्या बोला था वी डोंट नो, उन्होंने जो स्पीच दी थी वी डोंट नो, बट उन्होंने क्या लिखा था वी स्टिल हैव इट। So these are some advantages and disadvantages of speech and writing, right? And speech and writing are two components of verbal language. Uh, so we have completed our 2 units for today. Unit 3 जिसमें हमने verbal non-verbal communication पढ़ा, and Unit 4 जिसमें हमने formal informal communication पढ़ा. Now we have 10 minutes. Let us open the floor for doubts. आपकी जो भी doubts हैं आप पूछें, and in the next 10 minutes I'm going to resolve as many doubts as I can. Please अपने doubts chat box में पूछिए टाइप करके. So people asking from which book I'm teaching. It's not one particular book. I have collected different PDFs from different sources and different materials. It's not one particular book. It's my notes. Sarika is asking what is the difference between conscious and unconscious body movements. Sarika, जिन मूवमेंट्स का आपको ध्यान रहता है वो कॉन्शियस होते हैं, जिनका नहीं ध्यान रहता वो अनकॉन्शियस होते हैं। जैसे बहुत बार लेट्स से when I'm thinking, I eat my knuckles. That's a bad habit. Or when I'm thinking, I do like this. Or when I'm thinking, I do like this, right? So I'm not really aware of it because it's become my habit. So the movements that you're not aware of, जो आपको याद नहीं रहता कि हाँ आप ऐसा करते हैं, ये आपकी आदत हो रही है। जैसे मैंने बोला कुछ लोगों की बहुत आदत होती है अपने रिंग से खेलने की, फिंगर की रिंग से खेलने की, और वो उनको ध्यान नहीं रहता। तो दोज आर अनकॉन्शियस बॉडी मूवमेंट्स। Anand is asking, does body posture affect our communication skills? Yes, a lot, a lot.
Sanjana is asking कि अगर इंटरव्यू में हम बैठे हैं तो what would be a facial expression? A good facial expression, Sanjana, would be a relaxed body language. You have a slight smile, you make eye contact, a lot of eye contact, you don't frown a lot, and you just respond well, right? Tanvi, if there's something that you did not understand in the first chapter, what we are going to do is, जब classes हमारी खत्म होने वाली होंगी, I'll take one class where I'll resolve all the doubts of the entire AECC syllabus. So we can cover whatever you did not understand in the first chapter then, okay? Whatever you don't understand, just keep jotting it down and जो भी कोर्स में आपको नहीं समझ आता है वो हम एंड रिजॉल्व कर लेंगे. That's not a problem. Yes, about the WhatsApp group. So, what you guys do is you make a WhatsApp. See, so I don't have your numbers. I don't have your names. I don't know if class में कितने students हैं. हो सकता है 500-600 हैं. ठीक है. So I cannot collect numbers and I cannot make a WhatsApp group adding everybody. I cannot do that. That's not possible. So what you can do is you can yourself make a WhatsApp group. आप सारे students मिल के एक WhatsApp group बना लें या जो भी group आपको convenient पड़े वो group बना लें. आप में से किसी एक का मैं पर्सनल नंबर ले लूँगी. मैं जो भी नोट्स हैं उस इंसान को भेज दूँगी. वो इंसान उस ग्रुप में भेजेगा. आई डू नॉट वांट टू बी एडेड इन द ग्रुप बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ chaos. So you guys make a WhatsApp group for your own convenience. आप में से किसी एक को I will send the notes. Anybody who is very responsible and can be the class representative will get the notes and they can share the notes in the WhatsApp group. I will also, yesterday, in the first lecture, I could not upload the notes, but I'm going to do it today. तो ये जो 4 कवर हुए हैं उसके नोट्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे. आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, वहाँ भी मिल जाएंगे. Yes, suggestions can be, see, it was just an example. Suggestions can be included in both upward and downward communication. वो डिपेंड करता है कि कौन किसको दे रहा है. अगर आपको स्कूल का प्रिंसिपल देता है तो वो डाउनवर्ड हो गया. अगर टीचर प्रिंसिपल को देती है तो वो अपवर्ड हो गया. उसको देने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा बस. दिव्यांगना, यू सीम वेरी वरीड अबाउट द नोट्स. एज आई सेड, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले. आप में से किसी को मैं नोट्स भेज दूँगी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर देगा. इसके अलावा आपको यहाँ भी मिल जाएंगे नोट्स. आज ही मिल जाएंगे, कल तक मिल जाएंगे. The difference between personal and informal communication is ज़्यादा difference नहीं होता.
मतलब इतना ही है कि पर्सनल कम्युनिकेशन आप उन लोगों से करते हैं जिनको आप पर्सनली जानते हैं. It contains a lot of personal elements. Right? There's not much difference. Don't worry about it. There's not much difference. It's the same thing. Neha has made the WhatsApp group. I will send the notes to Neha, and Neha can circulate it on the WhatsApp group. Okay. See, there is an option of chat in Microsoft Teams. एक बार Microsoft Teams को अगर आप ठीक से देखें तो उसमें एक चैट का ऑप्शन होता है. तो चैट में आप किसी एक जने को अपने सबके नंबर देते हैं और वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे. और बाकी वो नोट्स के लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी. आई प्रॉमिस यू दैट आपको नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे. और जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं भी हैं, जो लोग नहीं बना there's also like a WhatsApp link or a WhatsApp invite, right? So maybe what you can do is you can make a WhatsApp group, and then you can send the joining link or the invite link on the chat here in Microsoft Teams, and that is how people can join WhatsApp even if you don't have the number. That's also one way. So like you figure it out. एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें. जो लोगों के नंबर नहीं है उनके लिए लिंक आप पोस्ट कर दें चैट में, और वहाँ से वो ज्वाइन कर लेंगे. ओके. वन लास्ट मिनट. एनीबडी हैज एनी मोर डाउट्स? किसी के और कोई डाउट्स है तो पूछिए, एंड देन वी विल रैप अप द क्लास. Alright, I don't see any more doubts. So we are going to wrap up today's class. I hope you enjoyed whatever it is that you found good, or whatever it is that you felt. Let me know in the comments or in the chat. I can also read the chat later. Um, alright then. I'll see you in the next lecture. Till then, take care. You'll get the notes. Don't worry too much. And bye bye.